मैंने कभी भी किसी पार्टी की सदस्यता को साइन करके कभी सदस्य बनी नहीं। मैं जब भी उनके पक्ष से लड़ी, उनके चिन्ह पे लड़ी, और ना ही उनके कभी पहले ऑफिस में गई, ना ही उसके बाद कभी ऑफिस में गई। वो एक इलेक्शन का पीरियड था, क्योंकि शायद 2 वर्ष हुए थे मेरी शादी को, गाँव मेहनत और गांव मेहनत करके जब उन्हें दिखा तो आगे से अपॉर्चुनिटी उनके तरफ से आई कि आप हमारे पक्ष से लड़िए, हम आपको टिकट देते हैं। तब मैंने वो चुनाव उनके ऊपर लड़ा था। उसके बाद जब मुझे समझ में मेरे लोगों के बीच में रहकर लोगों की भावनाएं जिस तरीके से थी, तब मैंने निर्दलीय चुना। पार्टी से मैं हार गई थी बहुत थोड़े वोट से, और निर्दलीय चुन के आती हूँ। तो विचारधाराएं मेरी पहले भी थी और बाद में भी थी, और विचारधाराओं के साथ आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी। तो तब आपको 2014 में मोदी जी या बीजेपी के बारे में कोई ख्याल नहीं आया था? 2019 में और अब 2022 में आप कह रही हैं कि आप मोदी जी को मानती हैं, उद्धव ठाकरे को नहीं। ऐसा क्यों? क्या बदल गए? देश बदल दिया। देश बदला है, देश की भावनाएं बदली हैं, देश के विचार एक सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम मोदी जी ने किया है। तो मुझे लगता है मेरी जितनी एज है उस पीरियड के दौरान, और 12 वर्ष इंडस्ट्री में रहकर, उसके बाद जब पॉलिटिक्स में, क्षेत्र में, समाज कारण में आई और जब लोगों की सेवा करने लगी, तब अंतर पता लगने लगा कि मोदी जी में और बाकी लोगों में क्या फर्क है, मोदी जी ने क्या बदलाव लाए हैं और क्या बदल सकता है, ये मोदी जी ने सबको दिखाया है। तो शायद वो विचारधाराओं के साथ मैं अग्री करती हूँ। चलिए, आप हनुमान जी की इतनी भक्त हैं, तो मुझे बताइए हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से, पर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ, उसके बारे में मैं जरूर बता सकती हूँ। नवनीत राणा जी, मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। एक बार कहा जाता है कि हनुमान जी जो बचपन में बहुत नटखट थे, उन्होंने सूर्य देवता को अपने मुंह के अंदर ले लिया था और पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था। इस बात का जब इंद्र जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर वार किया था, जिससे ठोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। और अब संस्कृत में ठोड़ी को कहा जाता है हनु, और मान यानी कि जो थोड़ी सी विकृत हो जाए या टेढ़ी हो जाए, तब उनका नाम हनुमान जी। तो आप इतनी हनुमान भक्त हैं, आपने पढ़ा नहीं हनुमान जी के बारे में? मुझे लगता है कि मैं हनुमान चालीसा जब संकट आई है, जब छोटे बचपन से हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो हम जितना इसमें पढ़ती हूँ मैं उतना, और आपके बताने के बाद अब जरूर इतिहास पीछे भी जाया जाएगा और पूरा इतिहास भी पढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के केस में मैंने ये पढ़ा और पढ़कर जाना हनुमान जी के बारे में, इसलिए आपसे आज शेयर किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेडिशन के केस में ये कहा है कि ये एक्सेसिव लॉ है, और सरकार ने भी कहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आपको लगता है कि आपका जो केस हुआ, पूरे सोसाइटी में एक बार फिर जागरूकता आई कि ये केस, ये लॉ जो है ये एक्सेसिव है? आपको लगता है कि इस लॉ पर स्टे तो नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इसे दोबारा इस दौरान में जब तक कुछ बदले तब तक इसका इस्तेमाल नहीं होगा? आपको लगता है ऐसा रहे? इसमें क्या है, हमारी जो केस है उसमें तो सेशन कोर्ट ने बताया था कि ये जो ऑफेंस है बनता ही नहीं है हमारे ऊपर, यानी सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय बाद में आया, पर जब बेल के लिए हम गए सेशन में, सेशन कोर्ट ने पूरी तरह से राज्य सरकार को फटकारा, पुलिस विभाग को फटकारा कि इस तरह से राजद्रोह का जो ऑफेंस है ये इन पे बनता ही नहीं है, इसलिए हम लोग बेल दे रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, मुझे जरूर ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के जमाने का एक कायदा है, जहाँ लोकमान्य तिलक जैसे, गांधी जी जैसे जो देशभक्त थे, उन देशभक्तों के ऊपर ये ऑफेंस लगा था।
जब आजादी के टाइम देशभक्ति थी, देश के लिए लड़ने वाले हमारे क्रांतिकारी जो नेता थे, उनके ऊपर अंग्रेज इस कायदे का वापर करते थे। पर आज मुझे लगता है उसी अंग्रेजों के विचारों पे हमारे यहाँ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी चल रहे हैं, पर ये जिन्होंने काफी स्टेट्स में लगता है। बाकी स्टेट्स में तो स्टेट में जो लगा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, पर हमारे यहाँ तो बनता ही नहीं था। हमारे ऊपर जो ऑफेंस लगा है, एक सेशन जज ने उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है, ऑर्डर दिए कि ये जो ऑफेंस है ये पूरी तरह गलत है और ये बनता ही नहीं है। तो मुझे लगता है इसका जानबूझ के अंग्रेजों के कायदे का जो यूज किया हुआ है उद्धव ठाकरे जी ने, ये क्रूर नीति है, क्रूर नीति। और अहंकारी जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसने एक हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर पहली बार मुझे लगता है देश में पहला केस होगा जहां पे देशद्रोह का ऑफेंस वो हनुमान चालीसा पढ़ने पे लगा होगा। बाकी जो ऑफेंस है जहां पे ऐसी घटनाएं होंगी, कहीं वातावरण खराब होगा, राज्य में कुछ तनाव तैयार होगा, कहीं वो ऑफेंस लगने के लिए कुछ मजबूरी होंगी, पर यहाँ तो मजबूरी भी नहीं थी। यहाँ तो पूरा उन्होंने, आप बार बार अहंकार की बात करते हैं, मैं बात करती हूँ जो वो मुद्दे उठाते हैं। अब अहंकार इज अ परसेप्शन जो इंडिविजुअल परसेप्शन है। मैं कमीशन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस कार्रवाई को कल भी जारी रखेंगे और हम लोगों को जो निर्देश था माननीय न्यायालय का कि एक आदर्श व्यवस्था दी जाए जिसमें कोर्ट कमिश्नर के द्वारा कमीशन की कार्रवाई सुचारू रूप से कर सकें, इसमें दोनों पक्षों ने भी सहयोग किया है और अब तक की कार्रवाई सकुशल चल रही थी। मुझे अभी जस्ट ये जानकारी मिली है कि ये कार्रवाई कल भी जारी रहेगी।
this is a feature over pages 4 and 5. Tory MPs, we read, are expecting an emergency budget in all but name from Rishi Sunak. Tell us more, Christina. Well, Tory MPs are certainly hoping for an emergency budget in all but name from Rishi Sunak. It's very hard to know what actually is happening because things are being constantly misinterpreted, and there's clearly a huge rift essentially between Boris Johnson and Rishi Sunak. Boris Johnson wants to just hurl money at whatever he can to keep himself in power, and he is worried, rightly worried, that the cost of living crisis is about to make him and the Tories very unpopular. Cost of living crisis actually puts it so mildly that it sounds like something quite small, but this is the biggest crisis in terms of cost of living that we have seen for decades, actually. And I mean, this kind of choice between heating and eating that people are talking about, it's no joke, but also some people are not even choosing between heating and eating. They actually are beginning not to be able to afford either. Usage of food banks and so on has gone up enormously. So Boris Johnson essentially wants a great popular measure taken, like a tax cut, that he thinks will boost popularity. The trouble is that Rishi Sunak doesn't want to incur any more debt, and the things he could do that might actually help people with the cost of living crisis, which would be targeting the poorest with, for example, benefit increases, or at least a reversal of the benefit cuts that he imposed after the pandemic. They're worried that that wouldn't cause enough positive publicity, to put it baldly. So I don't know where this is going to end up, but I very much doubt that whatever they do is going to be enough to A, solve the problem, and B, stave off the unpopularity that's likely to go with it. Well, Matthew, the Chancellor has said that he's not ruling out tax cuts. It might very well be something that he's looking into, and also he hasn't closed the door on windfall tax. So these lines that we're getting, that Tory MPs are expecting an emergency budget, there might be more to them than Christina is suggesting. I very much hope. I mean, Christina's, I think, completely right. This is a seminal moment for us as a nation. The cost of living crisis is going to be brutal, particularly for the least well-off people in our society, the poorest people in our society. And I think the concerns that increases in welfare payments, and it's welfare payments that are most important here. You can reduce taxes, as Sunak has been talking about, but that doesn't help people who are not in work, and they're often the most vulnerable at times like this. So it's got to be increases in welfare. Jacob Rees-Mogg said this week that the concern there is it might increase inflation. But I think that's a secondary issue. The Bank of England is fundamentally responsible for inflation. It's the government that has to take account of the distributional consequences of its fiscal decisions. And this is a time to step up and to show creativity, but most importantly, compassion. And I think if the government doesn't do that, the public will see it, and the people who are least able to do so will feel it and feel it deeply. You mentioned the Bank of England. Let's move to the Sunday Telegraph, because we read that ministers are actually turning on the Bank of England and complaining that they're not getting things right, Christina. Well, Tory backbenchers and ministers, for that matter, are very good at attacking people who are announcing bad news. I'm afraid they very often don't like reality, as is evident from the consequences of Brexit and the Northern Ireland Protocol and the problems that has brought to Northern Ireland and to our relationship with the EU, because the fact is that there is an inflationary spiral around much of the world at the moment, and I suspect that the economists at the Bank of England know rather more about how to control inflation than Tory backbenchers and some ministers do. But I understand that they don't like the figures. The figures are very, very alarming. Inflation is currently 7%. That's 5% above the target of 2%. So it is very bad news. But I think
this kind of constantly, I mean, it goes back to what Michael Gove said during the Brexit discussions leading up to the referendum. We've had enough of the experts, and unfortunately the experts often know what they're doing, whereas the elected politicians know rather less. So I think it's a sign of their panic, actually, because they're realizing that this is something that they can't control, not just inflation, but how they deal with the consequences of inflation. So I think it seems a slightly childish thing to me to do, but there's a lot of lashing out at the moment, and this is just one example of it. Yes, the Telegraph characterising this as a highly unusual attack. One of the senior ministers warned it has one job to do, to keep inflation at around 2%, and it's hard to remember the last time it achieved its target. Matthew? Well, I think, having looked at that story, there was some criticism from Lord Forsyth, a Thatcherite minister, I think from the John Major years. And I think the critique is that the bankers indulged in what's called quantitative easing to support the economy. You might remember they did this initially after the credit crunch in 2008, and also during the pandemic. I mean, this is quite unprecedented as an economic policy. And I remember back in the 1980s, there was a view that quantitative easing, monetary policy, the supply of money, was a fundamental determinant of inflation. And there was a letter back in, I think, 2009 that it would undermine Western currencies. I think it was a difficult judgment for the Bank of England. I agree with Christina, criticising an independent group of people seeking to keep on top of inflation is a risky thing to do for ministers, and to leak the idea that it might be brought under the orbit of ministerial control, that undermines the credibility of the bank in the financial markets. So I'm not keen on what they've said, and I do think that it's a difficult judgment. And I haven't personally made my mind up about the relationship between quantitative easing and inflation. It's a very complex and convoluted relationship. Yes, and one minister, a Conservative MP, actually quoted here as saying, pulled into higher tax bands. Christina? Yes, well, obviously this is arguably bad news for those who are pulled into higher tax bands. The prediction is that because of inflation and also rising wages, which is good news, clearly, more people, 1 in 5 people, are going to be likely to be paying more tax. That's in some ways bad news for them, but also very good news for them, because they'll be earning more, and it's good news for the Inland Revenue, for HMRC, because they'll have more money to spend, more taxpayers' money to spend. So the only way in which this is bad news for the government is because people might feel that they are paying more tax, and because the government want to be perceived as a government that cuts tax. Of course, if they actually want to be perceived as a government that cuts tax, it would have been helpful if they hadn't increased tax more than any government for some years, and that is precisely what they have done. So again, I think this is kind of panic on the government's front, that they can see that this is getting out of control. They can see that people are really feeling the squeeze. But I don't think the people we should be worrying about most in society are the people who are paying upper rate tax. You pay upper rate tax because, relatively speaking, you are considerably better off than the vast majority of people. So I personally don't think it's anything to worry about. But I can see that from the Tories' point of view, they think it looks like more bad news. Matthew, we've just got less than a minute on this section, but this does point further to the fact that we might be looking at tax cuts from the Chancellor, doesn't it? Yeah, I think the worry is that with the tax burden at its highest for, 70 years, and because the thresholds haven't been upgraded, more people are moving into higher thresholds. The Thatcherite Tories are very worried about the reputation of the party for keeping taxes low, which has been eviscerated. But of course, there's a deep tension within the modern Conservative Party between those who want low taxes and relatively low regulation, and the Red Wall Tories, so-called, who are quite keen on high taxation. And this deep tension within the party, I think, is reflected in the indecision, to a certain extent, of the government at the moment.